This is our cover page. Today we are going to learn the poem Daffodils. In Daffodils poem, start में हम पढ़ेंगे introduction to poet, then poem, then explanation with reference to the context, words and their meanings, then answers and questions. तो शुरू करते हैं. Introduction to Poetess. This poem is written by the famous English poet William Wordsworth, who was born in the beautiful Lake District of England in the year 1770. From his early days, he was very fond of flowers, birds, lakes, rivers, rocks, and trees. He used to spend much time enjoying their beauty. He used to take the long tours on foot and visit the beautiful natural scenes which he loved so much. He started a new kind of poetry written in simple words about natural objects and simple country people. He died in 1850. ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोएट का. आगे बढ़ते हैं. Stanza number 1. I wandered lonely as a cloud. मैं बादल की तरह अकेला घूमा. That floats on high over wheels and hills. जो तैरता है ऊंचा वादियों और पहाड़ों पर. When all at once I saw a crowd. जब अचानक मैंने देखा एक हुजूम. A host of golden daffodils. सुनहरे daffodils का एक झुंड. Beside the lake, beneath the trees, झील के किनारे दरख्तों के नीचे, fluttering and dancing in the breeze, बाद सबा में झूमते और नाचते हुए. Continuous as the stars that shine, सितारों की तरह मुसलसल जो चमकते हैं. And twinkle on the Milky Way, और कहकशां पर टमटमाते हैं. They stretched in never-ending line, वो कभी न ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए होते हैं. Along the margin of bay, खलीज के किनारे. 10,000 saw I at a glance, एक ही नज़र में देखे मैंने 10,000. Tossing their heads in sprightly dance, पुरमुसर्रत रक्स में अपने सिरों को ऊपर नीचे करते हुए. The waves beside them danced, but they, उनके करीब मौजों ने भी रक्स की, मगर outside the sparkling waves in glee, मगर खुशी में वो चमकदार मौजों से बाजी ले गए. A poet could not but be gay. एक शायर सिर्फ खुश ही हो सकता है. In such a jocund company, ऐसी खुशबाश दोस्ती में, कंपनी में. I gazed and gazed, but little thought. मैं उनको देखता रहा, मगर न सोचा. What wealth the show to me had brought, कि मुझे कितनी बड़ी दौलत इस नज़ारे ने दी थी. For oft when on my couch I lie, अब भी अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर सोफे पर लेटता हूँ. In vacant or in pensive mood, खाली वक्त में, फालतू वक्त में या किसी संजीदा सोचों में. They flash upon that inward eye,
वो मेरे अंदर की आंख से मुझे दिखाई देते हैं. Which is the bliss of solitude. वो मेरी तन्हाई में खुशी का बायस बनते हैं. And then my heart with pleasure fills. और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है. And dances with the daffodils. और daffodils के साथ नाचने लगता है. Explanation with reference to context. Stanza number 1. आपके लिए मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ. आप पढ़ें. जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना आपको काम आएगा. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. इसकी reference. The above lines have been taken from the poem The Daffodils, written by a famous English poem, William Wordsworth. ऊपर वाली पोएम जो लिखी है Daffodils, किसने? पोएट, शायर William Wordsworth ने. In this beautiful poem, the poet describes the scene of daffodils that amuse him so much. इसमें शायर ने वो नज़ारा पेश किया है जिससे देख के वो बहुत खुश हुआ, बहुत मुसर्रत हो गया. उसके बारे में ये पूरी पोएम है. Explanation. In these lines, the poet shares one of his experience with his readers. He says that once he was roaming near a lake and all of a sudden he happened to see the golden daffodils. The flowers were under the tree and beside the lake. The poet always says that the flowers were fluttering and dancing in the cool breeze. इन लाइनों में शायर अपने पढ़ने वालों के साथ अपना तजर्बा शेयर करते हैं. वो कहते हैं कि एक बार वो घूम रहे थे नदी के किनारे, तो एकदम उनकी नज़र पड़ी कहाँ पे? सुनहरी डैफोडिल्स की एक बड़ी तादाद उसको दिखाई दी. डैफोडिल्स झील के किनारे दरख्तों के नीचे बहुत ही हुजूम के साथ थे. शायर कहता है कि वो डैफोडिल्स झूम रहे थे, नाच रहे थे खुली ठंडी हवा में. Now stanza 2 continues. As the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Reference. The above lines have been taken from the poem The Daffodils, written by a famous English poet, William Wordsworth. In this beautiful poem, the poet describes the scene of daffodils that amuse him so much. रेफरेंस पिछले वाली सेम होगी, जिसे हमें पता है कि रेफरेंस हर पोएम की सेम ही होती है, हर स्टैंजा की सेम, पोएम नहीं स्टैंजा की सेम होती है. आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. Explanation. In the beautiful line, the poet says that the flowers are countless, just like the stars that shines in the sky. They were naturally planted by the lake in a river finishing line. The poet further says that he saw 10,000 in the first glance. They were fluttering and dancing happily. शायर कहता है यहाँ पर कि वो जो फूल थे वो इतनी तादाद में थे कि हम गिन नहीं सकते. तारों से मुशाबहत देते हुए कि जैसे आसमान पर तारे नज़र आते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, इसी तरीके से वो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने लगाए थे किनारे पे उस रिवर के, जो लाइन ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही थी. आगे बताते हुए पोएट कहता है कि उसने एक नज़र में 10,000 से ज़्यादा फूल देखे जो कि नाचते हुए नजर आ रहे थे बादी सबा में.
Stanza number 3. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. The poet could not but be gay. In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. अच्छा, इसकी रेफरेंस सेम होगी, आप पढ़ लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. Explanation. In these lines, the poet says that when the daffodils danced too, but the daffodils looked more beautiful and worth seeing than the waves, the poet says that a man like will always be happy to see such a splendid scene. He compares the scene with the wealth, which shows how much important it is to the poet. इन लाइनों में शायर कहता है कि जैसे उसने देखा वो खूबसूरत फूल डैफोडिल्स के झूमते नज़र आ रहे थे, डांस करते हुए नज़र आ रहे थे, वो लहर उसकी कोई कीमत नहीं. उसके अलावा वो शायर कहता है कि वो कितना खुश हो जाता है जब भी वो नज़ारा उसके जहन में आता है. आगे इसको कहते हुए शायर कहता है कि इससे बड़ी हमारे पास वेल्थ, कीमती चीज़ क्या होगी कि मैंने वो नज़ारा अपने जहन में समा लिया है. Stanza number 4. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. रेफरेंस पढ़ लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. जी, एक्सप्लेनेशन. It is one of the best poems of the Wordsworth, which illustrate his theory of poetry and nature. ये शायर जो हैं वर्ड्सवर्थ, उनकी सबसे बेहतरीन पोइट्री है, पोएम है, जिसमें वो अपनी नेचर है उसको बयान करता है. Here we find the emotion recollected in tranquility. Once poet saw large number of daffodils along the bend of a lake. They were dancing and glittering like the stars and Milky Way. The poet was once in a pensive mood and was sitting on a couch. He recalled the enthralling scene of nature and his mind started dancing with the daffodils. He forgot the fever and fret of the world and his solitude became soothing for him. यहाँ पर शायर ने ऐसे महसूस कराया है कि उसके पास जो एक बहुत बड़ा ख़जाना है जो उसके जहन में, वो डैफोडिल्स का नाचना, उसका मुशाहबत करना तारों की तरह, हज़ारों की तादाद में उसने जो डैफोडिल्स को झूमते हुए देखा खुली फ़िज़ा में, खूबसूरत हवा में, ठंडी हवा में. तो जब एक बार ये हुआ कि शायर बहुत ही संजीदा होके किसी अपने उसमें गहरी सोच में था, जो उसका मूड बहुत ऑफ था, अपने काउच पे लेटा हुआ था, तो आंखें बंद करके उसने जैसे ही वो नज़ारा याद किया तो उसका मूड बहुत खुश हो गया. वो खुश हो गए और वो अपनी सारी परेशानियां भूल गए एक लम्हे में, जैसे ही उन्होंने उन फूलों को याद किया, उस लम्हे को याद किया. Exercise answers to the following question. Where were the daffodils? Daffodils कहाँ थे? The daffodils were beside the lake beneath the tree. Question number 2. With what does the poet compare the daffodils? Poet ने daffodils को किससे compare किया? The poet compares the daffodils with the stars shining in the Milky Way. Question number 3. What resemblance does he find between the stars and the daffodils? क्या मुशाबहत दिखाई शायर ने तारों और daffodils के बीच में? The poet is of the opinion that
both the daffodils and the stars are countless. Moreover, he thinks that the stars and the daffodils are gorgeous to watch. Number 4. Mention the two moods of the poet. कोई भी दो मूड पोएट के बताएं. The two moods of the poet are vacant and pensive. Question number 5. What happened to the poet when he lies on the couch? उसके साथ क्या फीलिंग आई पोएट के साथ, शायर के साथ, जब वो अपने काउच पे लेटे हुए थे, सोफे पे लेटे हुए थे. आंसर. When the poet lies on his couch, the beautiful scene of the golden daffodils appears before his eyes and he begins to enjoy himself. He no more feels loneliness. Question number 6. How can the heart dance? Answer. We feel that our heart is dancing when we are happy. The feeling or pleasure of being delighted makes our heart dance. Word meaning. Word and their meaning. Wondered. The meaning is walked here and there without purpose. Well, valley, host, great number of groups. 4th, daffodils, beautiful yellow flower, fluttering, moving in the breeze, continues, going on without a break. Milky Way, a bright belt of stars in the sky. Bay, small part of a sea or a lake. 9. At a glance, quick look. Number 10. Tossing, rising and falling. Number 11. Sprightly, lively, brisk. Number 12. Outdid, past tense of out, do. Number 13. Sparkling, shining. 14. Glee, happiness. 15. Jocund, gay, lively. 16. Gazed, looked with wonder. Number 7. What wealth? Here what happiness? The show, the scene, oft, often, many, a time. Vacant, free hours, leisure time. Pensive, seriously thoughtful. Flash, sudden, bright, light. Inward eye, deep look. Bliss of solitude, great joy of being alone.